Good evening, everyone, and welcome to our show, Immigration and Settlement with Fayal Hussain. Thank you for joining us. This is our fourth show, और आपकी feedback जो है उसी से अंदाज़ा होता है कि you're very happy with the information you are receiving. This is not my show. This is our show, and we make it our show together. Today, we're going to talk about a very important topic. As I told you, आपको पिछले प्रोग्राम से मैंने बताया कि वीज़ा ऑफिस में फैमिली क्लास एप्लीकेशंस के ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस के ऊपर रिक्वायरमेंट्स भी आ रही हैं और स्पॉन्सर्स को थोड़ी सी दिक्कत पेश आ रही है कि उन रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा किया जाए. यू आर ओनली गिवन 30 days टू रिस्पॉन्ड टू दोज रिक्वायरमेंट्स. सो आइदर आस्क फॉर एन एक्सटेंशन or do meet those deadlines. I always get a question कि what are the reasons that you used to refuse applications? जी हाँ, I used to refuse applications because I was an immigration officer for the government of Canada. For 16 years I worked for the Canadian government in the immigration section, or now I have my own consultancy. I'm a regulated consultant working here in Islamabad. You can see my contact details on the screen. So to answer those questions कि फैमिली क्लास एप्लीकेशंस में वो क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं जो कि रिफ्यूज़ल्स से हमें बचा सकती हैं. So those tips I'm going to share with you today, coming from a former immigration officer. शायद ये आपकी मदद में आ जाए या शायद आपके किसी जानने वाले के लिए करामत साबित हो. When processing या preparing an application, keep in mind that the officer is going to review everything on file. जो चीज़ें आप नहीं सबमिट करेंगे, ऑफिसर के इल्म में नहीं होंगे, then they will not be able to make an assessment. And make sure that the forms are updated forms. जी हाँ, जो आपने forms पिछले साल डाउनलोड किए थे, please throw them away, please delete them. Download the updated forms because forms are updated regularly, all of the forms. एप्लीकेशन में जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप पहले एक दफ़ा गौर से पढ़ लीजिए. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन, you can ask someone you know, or ask somebody like me or all of my colleagues who are regulated immigration consultants what that question means. Simple questions like previous relationships, that's one big question जिसकी वजह से बहुत दफ़ा एप्लीकेशन जो हैं वो रिफ्यूज़ल की तरफ जाती हैं. अगर आप समझते हैं कि आपकी पहली वाली जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो चुकी है, इफ़ यू थिंक दैट आपके डिवोर्स के पेपर्स कंप्लीट हैं, मेक श्योर यू गेट देम चेक्ड बाय समबडी टू इंश्योर कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू कॉज अ प्रॉब्लम. बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पाकिस्तानी कल्चर में सिर्फ निकाह किया जाता है और रुखसती बाद में की जाती है. दैट्स वन इशू दैट्स कम टू माई ऑफिस विद क्लाइंट्स मल्टीपल टाइम्स कि सिर्फ निकाह किया है, रुखसती की अभी हमारी कोई इरादा नहीं है. व्हाट शुड वी डू? माई आंसर टू दैम इज़ ऑलवेज बी ट्रूथफुल. डू नॉट ट्राई टू मेक अप अ स्टोरी दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रूव एट द एंड. जो बात सही और सच होती है उसको प्रूव करना भी ईजी होता है. सो टू आंसर द क्वेश्चन दैट अगर सिर्फ निकाह हुआ है तो व्हाट शुड वी राइट ऑन द एप्लीकेशन, बी ट्रूथफुल as to why अभी तक रुखसती नहीं हुई है, what is the reason for the delay. Immigration officers are human beings. उन्होंने भी ज़िंदगी गुजारी है और गुजार रहे होते हैं, and they understand कि there are reasons why the marriage has taken place but the marriage has not been consummated yet. कि निकाह हो चुका है लेकिन रुखसती नहीं हुई है. You just need to explain it to them. अगर आपको explain करना नहीं आता तो you can contact me and my contact details are on your screen. एक बात इस ज़हन में रखिए कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स विल ओनली रिव्यू एप्लीकेशंस दैट आर इन इंग्लिश और फ्रेंच. सो एवरी पीस ऑफ डॉक्यूमेंट दैट यू सबमिट विद द फाइल वो या इंग्लिश में होना चाहिए या फ्रेंच में होना चाहिए. और अगर कोई डॉक्यूमेंट इंग्लिश और फ्रेंच में नहीं है तो उसकी आपको सर्टिफाइड ट्रांसलेशन साथ लगानी है. नॉट जस्ट द ट्रांसलेशन, अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल. जी हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का बर्थ सर्टिफिकेट किसी और लैंग्वेज में है, so you have to provide a copy of that birth certificate with the certified English or French translation. So a spousal sponsorship application is a very tedious application. उसको आप 2 दिन में तैयार नहीं कर सकते. If you do that and you submit that application, within 4 months आपकी application आपको वापस मिल जाएगी as incomplete and you will start from square one. एक और चीज़ आप ज़हन में रखिए कि
you have to be absolutely truthful in all immigration applications. चाहे वो एक simple visitor application है, चाहे वो spousal application है. When I say be truthful, अनजाने में भी कभी आपको बात नहीं ज़हन में रहती. You don't remember something. Be truthful that you lived in some country but you don't remember the dates. You can explain that to the officer. Requirement क्या है कि if you lived in that country for more than 6 months, you have to provide police certificates from that country. अगर आप ये समझते हैं कि उस कंट्री में आप रहे हैं 20 साल पहले, 15 साल पहले, तो there is no need to reveal that. That's not true. Be as forthcoming as possible. अगर किसी कंट्री का आप पुलिस सर्टिफिकेट नहीं हासिल कर सकते, make all attempts, make every attempt and keep proofs of those attempts. कि आपने क्या क्या कोशिशें की वो पुलिस सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए. And then you can attach that with the application with an explanation. That's all the officer needs at this point. An explanation as to why you cannot provide a document. If it's a document जिसके बिना वो application को process नहीं कर सकते हैं, they will let you know. But don't try to hide the fact that you've lived somewhere for more than 6 months just because you don't want to apply for a police certificate. I have refused many applications, unfortunately, when I was an immigration officer, for the same very reason that the applicant failed to declare that they had lived somewhere, और application में बाद में review करने में, investigation करने में मालूम पड़ा कि they had lived in a country जिसकी उन्होंने application के ऊपर जिक्र नहीं किया था. Remember, every form is signed by you and it is your responsibility. अगर आप immigration consultant भी hire करते हैं, उनकी अपनी responsibility and they have a professional responsibility. But at the end of the day, you should be forthcoming and you should tell them everything truthfully and they should share the forms with you because at the end of the day, it is your application. एक और चीज़ में रखिए कि spousal application में proof of communication is key. Because बहुत कम interviews होते हैं, about 20% of spousal applications are interviewed. The rest of the 80% are processed without any interviews. Why? Because they are put well together. Now, how do we prove communication? Phone पे बात करते हैं, you may have phone bills, you may not have phone bills. If you talk in text, you may talk in your own language. तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसा करते हैं, so print all those communications and if they need a translation, translate them in English as well because the officer is going to ask you. And if you don't do it now, this is going to increase the processing time of your application. So why not do it now? A stitch in time always saves 9. Proof of financial support. The sponsor may or may not support the applicant. अगर वो support करते हैं, financial support है either way, तो उसका कोई ना कोई proof होना चाहिए. So make sure that every paper that you have, every receipt that you have, every paper trail that you can keep to show that you are supporting your spouse or your spouse is supporting you, keep that with you because that will aid in the application. Bottom line is the officer looks at the big picture. They don't just look at the marriage pictures, they don't just look at the marriage certificate, they don't just look at your proof of communication. Officer looks at the big picture. Spousal application की requirement क्या है? A legally valid marriage and an ongoing spousal relationship. If you are able to satisfy the officer that your marriage is a legally valid marriage or your relationship is a legally valid relationship or your common law relationship is a common law relationship and it's an ongoing relationship, then there really should not be an issue in approving the application. One last very important tip for all those people who are in the process of preparing their spousal applications, how to prepare pictures. देखें वो ज़माना गया कि आपने पिक्चर्स को प्रिंट किया और उसके पीछे आपने लिख दिया कि पिक्चर में कौन है और पिक्चर कब उतरी और किस मौके पर उतरी. Please don't do that. Reason being कि when you send the application, the whole application gets scanned. So अगर आप 4x6 की पिक्चर्स भेजेंगे क्या होगा कि वो एप्लीकेशन स्कैनर में स्टक हो जाएंगी. So what you do is you attach those pictures in a Word document and label that Word document. That's the way I prepare my applications, and this is a tip from a former immigration officer that that's how you should prepare the application. But still, if you're not comfortable, if you need somebody professional to help you, you have my details, they're appearing on your screen. Write them down.
आज आपको ज़रूरत नहीं है तो किसी और को ज़रूरत पड़ सकती है, and hopefully I can make their application better. It's time for a break now, and we'll be back with a lot more information, and I will answer some questions. की शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के जरिए आप पाकिस्तान के रेगिस्तान में प्यासों को पानी पिला सकते हैं, गरीब बच्चों की तालीम और माली परवरिश कर सकते हैं, बीमारों का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। ज़कात, सदक़ात या फिदिया देने के लिए आज ही हमें फ़ोन करें 1-866-754-3111। A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well or a hand pump, call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Muslim Welfare Canada has made a concerted effort to lead the fight against child labor, poverty, and illiteracy in third world countries through the generous support of our donors. Both girls and boys receive free, good quality education. Help educate a needy child for just $1 a day or $30 per month. Donate generously. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Welcome back after the break. You are watching Immigration and Settlement on Voice of Toronto TV. I'm Fayal Hussain. I am a regular immigration consultant and a former Canadian immigration officer. जी हाँ, both sides of the table, that's the experience I bring. You can find my details on the screen. Write them down. You might not need them today. शायद आपको कल ज़रूरत पड़ जाए. आज आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आ रही हूँ, डूज एंड डोंट्स ऑफ अ विजिटर एप्लीकेशन. जी हाँ, क्योंकि ट्रैवल खुलने वाला है. International travel is going to be on everyone's top list. So what not to do and what to do in a visitor application. First and foremost is truthfulness. Be absolutely truthful. मैंने एक प्रोग्राम में पहले बताया था कि for 65 years the records are kept. तो अगर कोई 25 साल पहले आपकी कोई अमेरिकन एप्लीकेशन, कोई 25 साल पहले अमेरिकन वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, you do need to declare. जी हाँ, you have to declare it. अगर आपको डेट नहीं याद, whatever the case, explain that. Do not hide it. मेरे पास multiple clients आते हैं for the reason कि उनकी application
मिसरिप्रेजेंटेशन पे रिफ्यूज़ हुई है बिकॉज दे डिड नॉट डिक्लेयर प्रीवियस रिफ्यूज़ल्स। आपके लिए मेरे लिए ये छोटी बात होगी कि 20 साल पहले रिफ्यूज़ल हुआ, नहीं याद रहा, नहीं लिखा, but for an immigration officer this is huge. It's called misrepresentation. 5 years ban is what you get if you misrepresent yourself on an application. So make sure you are absolutely truthful. अगर आपको किसी चीज़ का अंदाज़ा भी है तो write a letter, a cover letter, explaining to the immigration officer that you think you went in this year or you were refused an application, so that they know that you are being as forthcoming as possible. The other thing is the updated forms. जी हाँ, पहले सेगमेंट में जैसे बताया, फॉर्म्स को अपडेटेड होना बहुत ज़रूरी है. फॉर्म्स गेट अपडेटेड रेगुलरली. वो फॉर्म्स जो आपने 6 महीने पहले प्रिंट करके फाइल में रखे थे, प्लीज़ उनको फेंक दीजिए जी, एंड डाउनलोड न्यू फॉर्म्स एंड फिल इन दोज फॉर्म्स एंड मेक श्योर दे आर वैलिडेटेड फॉर्म्स. वैलिडेट का बटन दबाने से ये कंफर्म होता है कि यू हैव फिल्ड इन ऑल द फील्ड्स ऑफ द एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन जो है वो सही से अपलोड हो पाएगी. अपलोड क्या है? अपलोड का मतलब है कि एप्लीकेशंस आर फाइल्ड ऑनलाइन, ना कि पेपर एप्लीकेशंस. दिस अ वेरी स्मूथ वे ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशंस, एंड ऑब्वियसली ऑफिसर के लिए एप्लीकेशंस को प्रोसेस करना भी ईजियर है. विजिटर एप्लीकेशन में एक और बात बहुत ज़रूरी है कि एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट यू आर सबमिटिंग, ये सोच के सबमिट कीजिए कि ऑफिसर ने हर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है. अंदाज़ों पे ना चलिए. एवरी डॉक्यूमेंट शुड बी वेरीफाइबल. वेदर वो वेरीफाई करते हैं या नहीं, लेकिन आपके ज़हन में ये कंफर्म होना चाहिए कि ईच डॉक्यूमेंट यू आर सबमिटिंग is going to be verified by Immigration Canada. An application is strong as the documents that are going to be on the file. अगर आप समझते हैं कि आज आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, make the application strong, don't submit it yet. Haste makes waste. तो तभी आप सबमिट कीजिए जब आपकी एप्लीकेशन जो है वो सही से तैयार हो जाए. If you need help, find somebody who can help you, who's done this before, either professionally or a family or a family member or a friend, somebody who knows what they're doing, because in a refusal, इनकार को हाँ में बदलना बहुत मुश्किल होता है. So once there's a refusal on any applicant's immigration history, then the next application becomes even more difficult to be approved. I have some questions that you guys have sent to me. I couldn't answer all of them, but I've chosen 7 questions which I thought may be able to help a variety of people. I did not declare my children before landing. Can I bring them to Canada? This is an issue that I faced with my applicants when I was an immigration officer. Landing करते वक्त, immigration की application file करते वक्त, उन्होंने अपने तमाम dependents declare नहीं किए. किस वजह से declare नहीं किए? That's separate issue. But declare नहीं किए. And now fast forward, they want to sponsor them. What happens is there's a regulation 1179D जिसके तहत वो उनको स्पॉन्सर नहीं कर सकते. एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस दैट पीपल कम टू मी कि फ़िलहाल इसका क्या हल है. हल तो हो सकता है. फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इशू क्या है, एंड देन वी कैन ऑलवेज मेक एन एप्लीकेशन विद ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स. कैन आई अप्लाई फॉर अ विजिट वीज़ा आफ्टर आई सबमिट द स्पॉन्सरशिप फॉर माई हस्बैंड? This is again a question that I hear 2-3 times a week. कि एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है, हस्बैंड को विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है. The requirements that an officer looks at when he or she issues a visit visa is this person a genuine visitor? Or the officer has to be satisfied that the person is a genuine visitor. तो अगर किसी की spousal application submit हुई है, तो how will the officer accept that it's a genuine visitor? इस बात को सोचिए. सो ये ऐसी बात नहीं है कि विजिटर एप्लीकेशंस नहीं एक्सेप्ट होती कि जिनकी स्पाउसल एप्लीकेशन सबमिट होती है, बट इट्स वेरी रेयर. इन द 16 years that I was working in the immigration section and I was an immigration officer, I don't think I approved one immigration application. I don't think I approved one visitor application कि जिनकी स्पाउसल स्पॉन्सरशिप सबमिट हुई थी, because that doesn't meet the requirements of the regulations. Is this person a genuine visitor? Can I go back home after submitting sponsorship for my wife? ये एक क्वेश्चन है जो मेरे पास लोग लेके आते हैं कि एप्लीकेशंस को हमने जमा कर दी, मैं वापस जा सकता हूँ, वाइफ से मिलने जा सकता हूँ. ऑफ कोर्स यू कैन, नो वंस होल्डिंग यू हियर. बल्कि इट मेक्स द एप्लीकेशन स्ट्रॉन्गर. आप अपने स्पाउस को विजिट करने जाएं, एंड आफ्टर यू कम बैक यू कैन अपडेट द एप्लीकेशन. जी हाँ,
स्पाउसल एप्लीकेशन को आप बाद में सप्लीमेंट भी कर सकते हैं. By updating the application, I mean you can submit proof of your visits, proof of any pictures, any receipts of any gifts that you bought for your spouse before going. All that can be submitted even after the application has been submitted. So बिल्कुल आप एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद अपने स्पाउस को विजिट करने के लिए जा सकते हैं. In a business file, what is net worth? Can my father's land be added? Unfortunately not. Net worth is basically the assets of the applicant and spouse, and that's it. So father's land, जिसके अंदर और बहन भाइयों का भी शेयर होगा, that cannot be added in your net worth. It is only you and your spouse. Any assets, expensive cars, expensive watches, jewelry, that cannot be added in a net worth. Is a student visa application a good alternative if the express entry points are low? बहुत ज़्यादा लोग इस बात में सोचते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री के पॉइंट्स लो हैं तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हैं. स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना तो बहुत इजी है. आपको एडमिशन लेना है, एडमिशन तो मिल जाता है. प्रॉब्लम आती है जब स्टडी परमिट अप्लाई करना होता है. बिकॉज अगेन द ऑफिस इज गोना लुक एट टू थिंग्स. इज दिस पर्सन अ जेन्युइन विजिटर एंड इज दिस पर्सन अ स्टूडेंट? जी हाँ, दोज आर द टू टेस्ट. So make sure that if you're doing a student visa application, it is for a student and is not a way to circumvent the requirements of immigration or express entry के points कम है तो इसलिए आप student visa apply कर रहे हैं. These are just some of the questions that I received this week, and I hope that I can help some of the people with the answers here. If not, you have my details. Feel free to contact me, and everybody have a safe week. Bye. Good night.